Good evening, everybody. Can anybody please tell me, am I audible to you? Okay, good evening, Devyani. Yes, okay, thank you, Vivek. So firstly, I welcome you all for the very first class of DSA for the month of January. And my name is Karishma Ahuja, and I'll be giving you a brief introduction about the company and the trainer. So I can see more and more people joining in. Okay, so let me just tell you a little bit about the company called Infinite Learning Solutions and for which you are attending the classes. Before I tell, let me just know, are you all comfortable with me speaking in English or you want me to mix it up? Comments in the chat window, please. Are you comfortable with me speaking in English or you want to mix up both? Okay. Okay, Vishal says mix. Okay. So, Infinite Learning Solution एक वर्ल्ड लीडिंग ट्रेनिंग कंसल्टिंग स्टाफिंग और प्लेसमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है अक्रॉस द ग्लोब हम सारे टेक्नोलॉजीज पे सर्विसेज देते हैं and irrespective of the student is undergrad or working professional हर किसी के लिए we have the courses and talking about the faculties. So we do have faculties with almost 16, 17 years plus of industry experience so that आप उनसे maximum benefit ले पाओ and उतनी ही अच्छी learning आपके लिए हो to get the best outcome possible. We have all kinds of courses, like whether you talk about personality development, whether you talk about mock interviews, आपको एक interview को कैसे crack करना है, interview prep का course हो या soft skills हो या basic IT courses हो, say for example full stack Java, web, data science, data analytics, all kind of courses are provided here, along with the placement assistance and internship assistance. So those who want to build their resume, those who are facing issues with building the resume, we also have such kinds of courses. Now talking about the trainer, so the trainer for today DSA batch will be Mr. Chandra Sinha. He has almost 22 years of experience. As I said, we have such kinds of faculty so that आप अपना अच्छे से maximum output उनसे ले पाओ. Okay, so before we begin and before I move out, a small 2-3 things I would just like you to know that this will be conducted for 1 hour. All the classes for DSA will be for 1 hour. अगर आपको कोई भी डाउट है, आप ग्रुप में like यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं in the chat window and we are ready to help you. या फिर आपको चाहिए, आप unmute करना चाहते हैं, आप unmute करके भी बात कर सकते हैं. Last. The duration for course will be for 10 days and each session will be for 1 hour. So I hope, okay, Suraj, my voice is not audible. Everybody, am I audible to you? Okay, Suraj, I would request you to rejoin because rest everybody is able to hear me. Okay, Romendra is also not able to hear me now. Now am I clearly audible? I'll just raise my voice. Okay. Okay, thank you, Tanveer. So I was saying we'll be having a 10 days classes. So I request all of you to be available at the same timing for daily basis so that आप इससे maximum benefit ले पाओ and every day the session will be of 1 hour. So last but not the least, I welcome you all for the very first DSA class and thank you so much for joining in. Chandra sir, over to you. Can you hear me, Chandra sir? Okay, I guess a bit of network issue.
No problem. We'll just start in a second. Yeah, I'm connected. Yeah, I'm connected. Hello, can you hear me? Hello, is I'm uh, is I'm audible to everybody? Yeah, yeah. Thank you, everyone. So we are going to start a very interesting sessions. The next 10 days, we will be talking about uh, a very interesting and very important thing. I hope here. Let me first second so little bit aware. Okay. I hope everybody can see my screen. Huh? Okay, fine. मेरी आवाज आ रही है ना? Okay, okay. So what this a little bit of our say meeting topics first, and then I will be talking about the most confusing thing about this data structure is that what to study and how to study. कैसे पढ़ना चाहिए, what you have to do, how to be comfortable with the data structure, really what data structure is all about. That is the very fundamental questions are always arises. Okay, 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 okay. Let me open the chart first. Okay, so so today's the agenda. Actually, we will be covering a lot of things. This is just an overview of some of the topics that we will be talking about. This is just brief things that we will be talking about. This broad outlines. We will be talking about a lot of things there. The most fundamental thing that you must understand is what really data structure is. Data structure hota kya hai? Why it is needed. Yeah, somebody saying voice is not clear. Is it clear now? I hope. Is my voice clear? Somebody just put in the chat. Yeah. So yeah. So the most fundamental thing to understand data structure is to understand what really data structure is, why it is done. Only then you will be able to understand why we are creating a linked list, or why we are creating queue or stack or graph or different type of algorithm. Why we are talking about different type of algorithm like dynamic programming and all these things. So the first and fundamental thing is to understand those things. So today we will be talking about those things first, and also I will be talking about what you have to install. Okay. First, I would like to know how many of you are from the non-IT background or have not done any programming before. Are there some people who have not done any programming before? Is there anybody? Yeah, one. Vishal is from non-programming background. No problem at all.
So I will be talking about the what are the prerequisite if you have to be good at data structure. But I hope that most of you have the knowledge of some programming language. How many? Yeah, you have Python. You have done Python. Divyani, you have done from non-technical, but I have done coding before. Yes, somebody from Java, some from C++, core Java. Okay, fine. So I will be talking about if you are in C++, what you have to learn. If you are in Java, to do a data structure, what you have to do, because you must have to understand what really data structure is. Language doesn't matter first to understand what data structure is. To implement the thing, you need a language. You need to be good at programming language. Even in the programming language, C and Python intermediate, chalega, no problem at all. Okay, I will be talking about the prerequisite of each programming language. किस C में आपको क्या क्या चीज में proficient होना चाहिए, Java में क्या, C++ में क्या. That is what I will be talking about. Okay, so first we will be talking about what really the data structure is and why data structure is really needed. Data structure की जरूरत क्यों पड़ती है. तो थोड़ी सी जो थ्योरेटिकल है आज, और हम लोग उसकी बात करेंगे कि हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए. ओनली फॉर दोज हु हैव नॉट इंस्टॉल एनीथिंग बिफोर, जिन्होंने प्रोग्रामिंग नहीं किया है तो उन्हें क्या इंस्टॉल करने की जरूरत है, हम कहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करेंगे. अगर आपने C++ या C नहीं किया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अगर हम लोग C में भी करेंगे, yeah, some recording will be available to people, to the registered user. Recording will be available one by one, but it will not be in the day one. धीरे धीरे आ जाएगा. It will be there, and you will get the certificate also at the end of the session if you. So first thing, I will talk about what really data structure is. The word is there, the data structure, what really it means before installing anything or any programming language. What happens when you talk about data? Okay, I will take the example of C because people who have done C++ may have done C in college. ठीक है, वहाँ तो कम से कम C सबने पढ़ा होता है. ठीक है, so I will start from the talking about the C. देन उसके बाद बात करेंगे बाकी सारे लैंग्वेजेस की. जस्ट कोई भी लैंग्वेज में एक डेटा टाइप होता है, और उस डेटा टाइप में हम क्या करते हैं, वी कीप आवर डेटा इनटू दैट पर्टिकुलर वेरिएबल ऑफ पर्टिकुलर डेटा टाइप. सपोज आई हैव टू राइट माय नेम, आई हैव टू सेव माय नेम. वेयर आई विल बी सेविंग माय नेम, आई विल बी सेविंग माय नेम इन एनी पर्टिकुलर डेटा टाइप. जावा में हम स्ट्रिंग में रख लेंगे. ठीक है, रख सकते हैं. सी में हमें क्या करना होगा, कैर डेटा टाइप है, उसमें मेरा नाम नहीं आएगा. ओनली वन कैरेक्टर कैन बी केप्ट. पाइथन में स्ट्रिंग है, str है, हमें तो डेटा डिफाइन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना. लेकिन सी में काम नहीं चलेगा. तो सी में हमें क्या करना पड़ेगा, अरे बनाना पड़ेगा. वी हैव टू क्रिएट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, हमें बनाना पड़ेगा, अरे बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये तो हो गया सिर्फ नाम रखने की बात. सपोज आई हैव टू कीप एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन रखना. सपोज आई वांट टू कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ ए स्टूडेंट, जिसमें स्टूडेंट का नाम भी है. लेट मी स्टार्ट पेंट प्रेस. So I have to keep the paint. So I have to keep the name. हमें name भी रखना है. Oh, sorry. Be bear with this, no problem. You will understand it. हमें name भी रखना है, उसके 5 सब्जेक्ट का मार्क्स भी रखना है, उसका टोटल भी रखना है. ठीक है, परसेंटेज भी रखना है. मेरे प्रोग्राम में I will be calculating grade. I just want to keep the grade also. Now, is there any data type? Is there any data type that will able to keep these things? Is there anything? So I am talking about something called the
user data type. Then after that, I will be talking about something called the ADT, abstract data type. I will be talking about later on. So, okay. So first, I'm just talking about different data type. Then the question of data structuring will come. Is there any data type that will be able to where we will be able to keep these things? Actually, no. Primitive data types are not there. Struct you are talking about, yes, struct is a not a primitive data type. You have to create your structure, and structure is a combination of string, int, float. जो भी डेटा टाइप अवेलेबल होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप अवेलेबल होते हैं, स्ट्रक्ट सी में बनाते हैं, तो वहाँ इंट है, अरे है। दूसरा जो आप डेटा टाइप आप बनाएंगे, जैसे आप अरे बनाएंगे नेम क्रिएट करने के लिए कैरेक्टर का, तो उसका आपने क्या किया, उसका एक कॉम्बिनेशन आप बनाया, ठीक है। इट इज नॉट ए प्रिमिटिव डेटा टाइप बट इट्स अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास इज ऑल्सो ए टाइप। आपने उप्स में देखा, क्लास क्या होता है, टाइप होता है, ठीक है। सो क्लास आप बनाएंगे, स्ट्रक्ट बनाएंगे सी में, सी प्लस प्लस में क्लास बनाएंगे, जावा में क्लास बनाएंगे, तो यूजर डेटा टाइप इज नॉट देयर, ठीक है। तो यू हैव टू क्रिएट सम स्ट्रक्चर। तो ये हो गई शुरुआत डेटा स्ट्रक्चर की। यू आर क्रिएटिंग सम डेटा स्ट्रक्चर। Array is a data structure, most fundamental, simplest data structure, common data structure is array. Array itself is a data structure. जो आप क्या कर रहे हैं, primitive data type से बना रहे हैं. Why you are making it? Because the data type, primitive data type that you have is not sufficient. You can't keep the name. But you will say in C++, we can keep the name. C++ में तो रख सकते हैं, कैर की जगह स्ट्रिंग डेटा टाइप है, हम जावा में रख सकते हैं, हमारे पास स्ट्रिंग है। एक्चुअली वो तो डेटा टाइप प्रिमिटिव होता नहीं है, बल्कि स्ट्रिंग है, उसमें हम रख सकते हैं। सेम इज देयर इन द पाइथन, हम रख सकते हैं। बट ये स्ट्रक्चर रख सकते हैं, नहीं रख सकते। दे हैव टू क्रिएट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। तो पहला चीज क्या हुआ कि समटाइम दिस keeping the data, I'm just taking the example, simple example, it is not sufficient. Now talk about, you have से डेटा हमें रखना है से कस्टमर का, ठीक है, या यूजर का, एंड देयर आर 1 मिलियन ऑफ देम, देयर आर 1 मिलियन ऑफ देम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उस डेटा के ऊपर ऑपरेशन करना है, ठीक है। वी हैव टू डू ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन करना है, डेटा नया इंसर्ट करना है, उसमें से डिलीट करना है, उसको अपडेट करना है। मोस्ट कॉमन ऑपरेशंस आर देयर। वी वांट टू डू सर्टेन ऑपरेशन ऑन द डेटा, ठीक है। हमें क्या करना है, ऑपरेशन करना है। और हमने कौन सा डेटा रखना है, इन दैट केस हम किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, व्हाट वी कैन कीप, एनीवन, कोई एक टाइप बता दें जिसमें हम ढेर सारे रिकॉर्ड रख सकते हैं कस्टमर का या स्टूडेंट का, व्हाट वी कैन डू। पाइथन में लिस्ट रखेंगे, है ना, पाइथन में लिस्ट है, सी प्लस प्लस में अरे है, सबसे सिंपल लिस्ट वाला तो अरे ही है, उसको ही यूज करेंगे, isn't it? But the problem here is कि okay, now we have to, अगर बात करें in the sense of C, then you have to create an array of a structure. You have to create an array of a structure. In C++, you have to create an array of a class, है ना, object का array बनाना पड़ेगा. Now, we want efficiency also. We want efficiency also, and we want all the facility. But if you keep the array, then there is a problem. Once an array is created, you can't change it. आप उसको change नहीं कर सकते. Suppose you have created with 1000 का size का array बनाया, you can't keep even a one more, and that will take a lot of space. Once either you are using it or not using it, 1000 into size of your class or structure, that space will be allocated at the end of at the beginning of the program, and it will be there. You can't do it. आप उसको डायनामिकली छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं. So there is a problem with the array also. No? Then what you to do? They will Python वाले बोलेंगे कि no, I have no such problem in list.
वो ग्रो करता है, हम अपेंड करते चले जाएंगे, ग्रो करते चला जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम इज देयर। इट लुक्स लाइक दैट आई विल टॉक अबाउट द पाइथन डेटा स्ट्रक्चर आल्सो, ठीक है। तो एट प्रेजेंट टाइम टॉकिंग विद अ वेरी कॉमन लैंग्वेज, है ना, सारे लैंग्वेज सारे को मिला के बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज टू अंडरस्टैंड डेटा स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग द डेटा स्ट्रक्चर इज द मोस्ट fundamental thing. Only then we'll talk about the language. Okay, we'll talk about the language. So we want, I want to insert in the beginning, in the given position, in the last. It's very very complicated in array. If you want to put any value in between somewhere, then you have to push a lot of values. I'm taking the example of C first, because it is there for the most of the time. Python is a baad ki cheez hai. So I will talk about in the sense of the C first. If you want to put it somebody here and you have a data here, then you have to push it forward if you have the space. अगर स्पेस है तो आप पुश कर सकते हैं, सभी को पुश करना होगा, और स्पेस नहीं है तो पुश भी नहीं कर सकते हैं। सब कुछ मान लेते हैं वी हैव स्पेस, then there will be a lot of operation, lot of overheads to your CPU, and it will also take a lot of time. So what is there? The efficiency is less. There will be a lot of time complexity. It will take a lot of time. You have to run a lot of a big loop to shift everything. One सबको shift करना पड़ेगा. Only then you will be able to do it here. If you want to in the beginning, again the same problem. End a little bit simple, provided that you have a space. So the primitive data type doesn't give you that efficiency. So you want a data structure that is efficient and also sufficient as well the efficient. Efficiency means complexity, the time complexity should be less. We will talk about those things. Okay. Okay. So the data structure is all about creating those data. Now we'll talk about the ADT, abstract data type. What the abstract data type is. So before going to just talk about few more things, you want data structure. The definition is the data organization, management. I hope everybody can see my screen, and a storage format that is usually chosen for the efficient access of data. Not only efficient access, but the efficient operation on the data. So what we want? Efficiency in the data storage, efficiency to do operations like input, store, process, retrieve. Okay. Next, just a minute. And the next thing that we will talking about is algorithm. What is algorithm? Algorithm is way to do something. कोई भी काम, कोई भी operation करना है, because data structure and algorithm go side by side. You need algorithm to do the things on data structure. So the understanding what is algorithm is very very important beforehand. The algorithm क्या है? It's a step to do anything. It's a procedure. Suppose you want to insert in the beginning. So you will have an algorithm. What you have to do, you have to create a pointer, you have to create a node, or what to do that operation. Even if you want to calculate, say, compound interest, you have an algorithm. You will take the data, calculate this, and there will be some decision making also. Suppose you want to check whether a given date is say a leap year or not. So you will be taking the data and dividing it by 4, and there will be algorithm to do these things. Okay, algorithm means how to solve the problems. The data structure and algorithm go side by side. You will have the algorithm to do the operation on data structure, and that is what is really studied in data structure. क्या हम data structure में पढ़ते हैं? We study algorithm. Okay, now before going to next things, we will also talk about what. Okay, just one thing. Characteristic of algorithm is that unambiguous or definite means स्टेप आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, नंबर ऑफ स्टेप आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा स्टॉप होना चाहिए कि कब आपका फंक्शन क्लोज होता है, ठीक है. डू इट अंटिल इट इज वेल कुक्ड, इट इज नॉट द एल्गोरिथम, ठीक है.
आपको टी बनाना है तो आपको डिफाइन करना होगा कि टेम्परेचर कितना होगा, बॉयल कितने मिनट तक करना है, शुगर कितना ग्राम डालना है, वाटर कितना मिलीलीटर लेना है, कितने टेम्परेचर पर उसको बॉयल करना है, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। यानी कि अंदाज से, दैट इज व्हाट वी कॉल इन हिंदी के अंदाज से बोलो कि वो बॉयल करो कि वो हो गया या नहीं हो गया, है ना। नो, एवरीथिंग शुड बी डिफाइंड। सपोज यू वांट टू क्रिएट अ मशीन फॉर क्रिएटिंग टी, ऑटोमेटेड मशीन चाहिए, यू हैव टू डिफाइन एवरीथिंग, temperature, time, amount of everything that will be mixed, everything. So algorithm must be clear. Every steps should be very very clear, and there should be an exit position कि switch off कब हो जाएगा मशीन, टी कब रेडी मानेंगे, टी रेडी हो गया और मशीन आपने क्या करना, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। एल्गोरिथम इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। आप कोई भी लैंग्वेज यूज करेंगे, एल्गोरिथम विल रिमेन द सेम। ये आपके ऊपर है कि आप किस लैंग्वेज में आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो बिफोर दैट आई विल बी गोइंग बैक टू सम वेरी फंडामेंटल थिंग, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, what is the relation between algorithm plus data structure creates a program. Really, there is a book also, Nicholas, written by Nicholas With. The name of the book is Algorithm plus Data Structure is equal to Program. Okay. Okay. So why do we study data structure? Why do we study data structure? I will just talk about these things before, because in campus interview, it is the most common questions are coming from the data structure. Data structure के ऊपर बहुत अधिक क्या होता है, emphasis होता है. Everybody know data structure is the most important topic in any interview, especially the campus interview. And data structure is also something very very important for your career also in academics also. You are in BCA or MCA or BTech computer science or even MTech computer science. Data structure से आपको पढ़ना ही पढ़ना है from the beginning to the highest level of degree in computer science. Data structure आपको हर जगह पढ़ना है. आपको BC में भी पढ़ना है, आपको MC भी पढ़ना है, आपको BTech में भी पढ़ना है, आपको MTech में भी पढ़ना है. Data structure पढ़ना ही पढ़ना है. Number 2, data structure जब आप एडवांस DBMS पढ़ेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे, एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, एडवांस वाला, देन आपको नजर आएगा कि लॉट ऑफ चैप्टर्स आर रियली डेटा स्ट्रक्चर. ओके, बिगिनिंग वाले में नहीं लगेगा, बट इफ यू गो फॉर द एडवांस DBMS, if you go for the advanced operating system, you will find a lot of things you are studying is really data structure. Okay, so that is why data structure is something must for the academics. In job also, in big company जो product based company है, product based company है, जैसे जिसको मैंग बोलते हैं और दूसरी बोलते हैं, this product based company give lot of emphasis on data structure and algorithm. They give you the choice. They give you the choice. You do it on C++, you do it in Java, you do it in any language, doesn't matter. Okay, you have to solve the problem. आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है. लैंग्वेज इज ऑफ योर चॉइस. दे विल नॉट गिव यू कि ये आपको C++ में ही करना है. बट एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर, दीज आर द फंडामेंटल ऑफ देयर selection process. Why? Because one as good at algorithm and data structure, that means that he will be able to create any application, any function, because he know how to create an algorithm. एल्गोरिथम बनाना सबसे बड़ा जरूरी चीज होती है. एल्गोरिथम आप बना सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं. दैट इज व्हाट इज नीडेड इन हाई एंड प्रोग्रामिंग, जहां पर यू आर क्रिएटिंग प्रोडक्ट, you are creating some software, then it is very very important to you have a good algorithm making capability. तो एल्गोरिथम बनाना, उसको किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करना आपको आता है, दैट इज वेरी वेरी गिवन अ वेरी गुड एम्फेसिस ऑन द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज. तो वहां भी ये होते हैं. लोग कितना समय लेते हैं, okay, and sometimes some people who have cracked the or the exam of say Amazon or they say
दे हैव अ बिग, उन्होंने अपना एक रोड मैप बनाया था 1 year का, to be a very very proficient in data structure. So understanding of data structure is very much important. Only then you will be able to create your roadmap कि आपने डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या सीखना है, कैसे आपको इफिशिएंट होना है, क्या आपको प्रैक्टिस करनी है, वो जानने के लिए डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाट इज द आवर फर्स्ट, आज का एजेंडा इसी के ऊपर है कि आप डेटा स्ट्रक्चर का मतलब अच्छी तरह से समझ जाए. आई होप एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट्स. एनीवन हैज एनी क्वेश्चन और क्वेरी टिल नाउ? Just put in chat. Whenever you have anything to ask, you put in chat. I will cover that in today. Okay. So the next thing that I want to tell about is, I was talking about the why is it important to have knowledge of data structure. It is for the academics and career. Even in programming, without algorithm, you can't solve anything. Okay. Kundan Kumar, what you really want to say, you can just put it there, you know, and even you can use your. Somebody has raised hand. Okay, if possible, we can you can unmute yourself if you can, and you can question. Okay, आप unmute कर सकते अगर हो जाए तो, नहीं तो आप put your problem here in the chat. Okay. So the next topic I will be talking about is language, because somebody say I'm good at Python, I have no knowledge of C, or somebody have the knowledge of C++. So I will be talking about the prerequisite. Ki agar aap, I will be going for a lot of things. Before that, I will just talk about the prerequisite, and then talk about the installation. Okay. So prerequisite kya hai? What are the prerequisite? Means कोई लैंग्वेज में, आई विल टॉक अबाउट द प्रीरिक्विजिट ऑफ एवरी लैंग्वेज. मैं सबकी बात करता हूँ एक एक करके. सो सपोज, सो फर्स्ट यू स्टार्ट विद द सी. मैं सी की बात करूं, ठीक है. आई विल स्टार्ट विद सी. सी में व्हाट यू हैव टू नो, जिस लैंग्वेज में आपको डेटा स्ट्रक्चर करना, आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट, बिकॉज सम पीपल क्या होता है कि दे हैव द डेटा स्ट्रक्चर इन देयर सेमेस्टर. उनके सेमेस्टर में सी डेटा स्ट्रक्चर होता है, और डेटा स्ट्रक्चर जनरली लैंग्वेज के साथ ही होता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड सी समथिंग लाइक दैट, एंड दे वांट टू learn the data structure along with their programming language. C सीख रहे हैं, साथ साथ में data structure independent of the programming language सीखना चाहते हैं. Then they will have the problem. They have to just remember the code. उन्हें क्या करना होगा, कोड रटना पड़ेगा, और वो कुछ समझ में नहीं आएगा. आई एम वेरी वेरी फ्रैंक अबाउट दैट, क्योंकि कोड रटेंगे, है ना, तो डेटा स्ट्रक्चर समझ भी नहीं आएगा. दे विल बी जस्ट रिमेंबरिंग दोस थिंग्स कि इंसर्ट करना है तो ऐसे कोड लिखे, डिलीट करना है तो ऐसे कोड लिखे, समथिंग बिनेट के लिए ऐसे लिखे, यानी तो एल्गोरिथम को रटते हैं. ठीक है. समटाइम क्या होता है कॉलेज में, सिर्फ एल्गोरिथम या कोड, दे हैव द चॉइस व्हाट दे वांट टू, दे विल जस्ट सिंपली ट्राई टू रिमेंबर इट एंड जस्ट नोट इट. तो हमें क्या करना है कि वो नोट करने का और रटने की जरूरत ना पड़े, हमें समझ में आए, हम विजुलाइज कर पाए कि हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग ऑन. only then you will be in a position to understand the code, because कोड लिखने का कन्वेंशन अलग अलग बुक में अलग अलग ढंग से होता है. तो अगर आपको एक बुक समझ में आ रहा है तो हो सकता है दूसरा बुक समझ में नहीं आए, बिकॉज द वे दे राइट द कोड इज डिफरेंट. ओके. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड the basic concept. Until then, it is not possible. So, very, very frankly, that is why I'm going to the prerequisite. If you are learning data structure, you must be very, very proficient with your programming language, जिसमें आप उसको करना चाहते हैं, और किस लैंग्वेज में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, जस्ट आई वांट टू नो. सी में क्या क्या आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम योर data types and looping and control structure. Apart from that, you should be good at function. फंक्शन अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट, द रिकर्सिव फंक्शन.
Okay, recursive function, R recursive function, because जो ट्री जैसे जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उनका ज्यादातर इम्प्लीमेंटेशन रिकर्सिव वे में होता है। जितने भी ट्री वाले होंगे, ग्राफ वाले होंगे, वो मोस्टली आपके जो एल्गोरिथम आप लिखेंगे रिकर्सिव लिखेंगे, बिकॉज जो डेटा स्ट्रक्चर जो ट्री का होता है अपने आप में रिकर्सिव होता है। ठीक है, आई विल कमिंग टू दैट। हाँ, मैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर की बात करूंगा, उसके उसके कोड भी लिखेंगे, तो यू विल फाइंड रिकर्सिव फंक्शन आना चाहिए। देन आपको आना चाहिए अरे, सिंपल छोटा स्टैक आप अरे में क्रिएट कर सकते हैं। सो यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ अरे। ठीक है, नेक्स्ट यू शुड बी वेरी गुड एट स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर, जो भी कीवर्ड की बात नहीं करें, स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पॉइंटर आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। आई pointer, everything using pointer, function using pointer, array using pointer, structure and pointer. These are the most fundamental thing you must know to do data structure programming in C. क्योंकि आप हमेशा क्या करेंगे, आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप स्टैक भी एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्यू भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, एवरी नोड ऑफ योर ग्राफ और ट्री विल बी अ स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होगा, एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर होगा, या एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें दो पॉइंटर होंगे, है ना, नेक्स्ट का, प्रीवियस का, या लेफ्ट का, राइट का। यू विल हैव अ स्ट्रक्चर विथ पॉइंटर ऑफ ओन टाइप, अपने टाइप का ही एक क्या होगा, पॉइंटर होगा। जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ से लिंक लिस्ट में क्या होगा, यू विल हैव अ नोड and have a pointer of its own type, ताकि वो अपने तरह के ही दूसरे नोड को पॉइंट करे। सो वी विल बी क्रिएटिंग ए सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। अगर ये ट्री है तो क्या होगा कि इसमें क्या होगा, दो पॉइंटर होगा सेल्फ टाइप का, लेफ्ट का और राइट का। सो यू विल बी बेसिकली क्रिएटिंग स्ट्रक्चर विथ वन और टू or many pointers of self type, self reference structure. Apart from, you should be good at memory allocation, just like अगर किसी ने C function C पढ़ा हो तो function is that malloc, calloc, है ना। so क्या क्या एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आना चाहिए, मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, गार्बेज कलेक्शन, मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, these are the fundamental things you must know to do data structure programming in C. What about the C++? What about the C++? I will talking about everything, है ना, हर लैंग्वेज की बात करूंगा। C++ में क्या आना चाहिए, C++ में आना चाहिए दिस थिंग्स, फंक्शन, रिकर्सिव, अरे, ये तो आना चाहिए, पॉइंटर आना चाहिए। स्ट्रक्चर की जगह क्लास से काम नहीं चलेगा, क्लास की जगह उसके आगे टेम्पलेट आना चाहिए। ठीक है, टेम्पलेट, टेम्पलेट आना चाहिए। ठीक है, एनीवन हैज द आइडिया ऑफ टेम्पलेट? टेम्पलेट, एनीवन जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग की है, C++ किया है? टेम्पलेट, एनीवन? कोई भी टेम्पलेट का आइडिया है किसी को? नो? C and Python intermediate, somebody is saying the object or class. No, nobody has the idea of template. So template is the essential thing you must know when you will be doing data structure using the C++. Template are of really two type, class template and function template. ये आपको आना चाहिए, apart from this function, recursive function, array,
स्ट्रक्चर की जगह क्लास आना चाहिए, पॉइंटर आना चाहिए। मेमोरी एलोकेशन C++ का अलग होता है, इंस्टेड ऑफ एलोक मैलोक यहाँ पर न्यू और डिलीट होता है, ठीक है। सो टेम्पलेट आना चाहिए एंड रेस्ट ऑफ दिस थिंग्स आर आना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन मोर थिंग दैट यू मस्ट नो इज STL। हैज एनीबडी हर्ड अबाउट दिस वर्ड? ये टॉपिक किसने सुना है? STL, C++ STL? नो, किसने सुना है? स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, फाइन। तनवीर, STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, यस सर, ठीक है। STL इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप C++ में डेटा स्ट्रक्चर कर रहे हैं, बिकॉज आपको सिंपल कुछ तो पहले आपको टेम्पलेट अपने बनाने पड़ेंगे, नहीं तो डिफरेंट टाइप के जो एल्गोरिदम है उसके लिए टेम्पलेट पहले से STL में बना हुआ है, ठीक है। प्रोवाइडिंग कॉमन स्ट्रक्चर ये होता है डेटा टाइप से अलग, टेम्पलेट का मतलब ही यही होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द डेटा और टाइप, जो टाइप आप बाद में प्रोवाइड करते हैं टेम्पलेट होता है, क्लास एंड फंक्शन टेम्पलेट होता है। लेकिन पूरा का पूरा जो आप बनाएंगे, ट्री बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, और उसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे, इसके लिए पहले से ही C++ में एक लाइब्रेरी बनी हुई है, द लाइब्रेरी इज कॉल्ड द STL, और आपको वो C++ इंस्टॉल करना पड़ेगा जहां पर आपको STL भी मिलता है, ठीक है। सो विल टॉकिंग अबाउट विच इम्प्लीमेंटेशन ऑफ C++ हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो STL इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू आर डूइंग C++, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++। व्हाट अबाउट द जावा? मैं पाइथन की भी बात करूंगा। जावा में बेसिक तो जावा प्रोग्रामिंग आनी ही चाहिए, फंक्शन, रिकर्सन, एरे, उसका जो अपना होता है स्ट्रक्चर की जगह उसका अपना जो उप्स होता है, क्लास आनी चाहिए, इनहेरिटेंस आना चाहिए, जो भी है बेसिक जावा तो आनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द देयर इज ए कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। कलेक्शन फ्रेमवर्क है, कलेक्शन फ्रेमवर्क है, जावा कलेक्शन है और जावा जेनेरिक्स है ना। इसका आइडिया आपको होना चाहिए इफ यू वांट टू डू डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग इन जावा, ठीक है। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? वहां पर आइटरेटर और एवरीथिंग इज ऑलरेडी क्रिएटेड है ना, डिफरेंट टाइप का आपको आपकी चीजें, बहुत सारी चीजें इसमें वैसे ही लगेगी जो आपके STL के अंदर में आइटरेटर है। दोस्तों मैं कुछ चीजें अभी दिखा भी दूंगा आपको कि C++ में कैसा रहता है। तो एल्गोरिथम वी विल टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी और इसके बारे में बात करेंगे। सो टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वी विल टॉकिंग अबाउट, नॉट टुडे। abstract data type, different type के जो होते हैं, lot of fundamentals will be there, stack, उसकी बात नहीं करना चाहता हूँ। I just want to say it about C++ के बारे में थोड़ा सा, कि ये STL होता है ना, STL के अंदर में STL के कंपोनेंट होते हैं, एल्गोरिथम होता है, कंटेनर होता है, आइटरेटर होता है और फंक्शन होता है। तो ये STL हमें पता होना चाहिए, ठीक है, अगर आप C++ में कर रहे हैं, ठीक है। आई होप समझ में आएगा। जावा में क्या होना चाहिए? कलेक्शन फ्रेमवर्क, जेनरिक्स जानना चाहिए। व्हाट अबाउट द पाइथन? पाइथन में क्या चाहिए? पाइथन में आप बोलोगे कि भाई व्हेन वी टॉक अबाउट द लिस्ट, पाइथन लिस्ट, यू कैन डू द इंसर्शन एट द विंग, अपेंड करेंगे तो इंसर्शन हो जाएगा। स्टैक जैसी चीजों के लिए वी हैव व्हाट, स्टैक के कोई ऐसा एल्गोरिथम जो स्टैक में होता है, जो लिस्ट में अवेलेबल होता है, कोई फंक्शन बताएगा जो स्टैक वाला फंक्शन लिस्ट में अवेलेबल होता है? एनीथिंग? पॉप, हाँ, जो अपेंड होता है वो पुश होता है, लास्ट में हाँ इंसर्ट होता है, लिस्ट में पॉप पहले से ही होता है, ठीक है। तो यू विल यू if you want to insert at any place, I'm just talking for the push is not there, but pop is there and push append के सारे हो सकता है, इंसर्ट भी करने का रहता है, आप पोजीशन दे सकते हैं कि किस पोजीशन पर आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। सो
So you will look like if Python list has everything. Python list में तो सब चीज पहले से है, तो हमें कुछ अलग से डेटा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है. नो, नॉट रियली, बिकॉज द लिस्ट जो इंसर्ट इन जो इंटरनली होता है एक डायनेमिक टाइप का एरे होता है. ठीक है, आफ्टर फ्यू थाउजेंड ऑफ मेंबर इन अ लिस्ट इसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा. ठीक है, तो पाइथन में भी लिंक लिस्ट जैसी चीज बनानी पड़ती है. ओके, even if you do the this programming in Python, then here you will have to create the linked list type of thing. List will not be enough. If your size of your list grows, then the all operation will not be as efficient. Apart from certain structure like say graph and tree, it will be a bit complicated or say not so efficient if you utilize just the list. So the type of data structure that we are making in other language, that also have to be created in Python too. Was it clear to everybody? I hope. So our today's agenda was to just understand a lot of thing about the data structure. So I was just going through the topic that what you need. Okay, next we will be talking about what are the different type of data structure. And one thing that I was talking about is about the another topic that I was talking about, the ADT. This is where very important to understand what is ADT. सबसे पहले मैंने बात किया UDT, user defined data type की बात की. We talked about array, we talked about structure, class. And what about the ADT? What is the difference between the UDT and ADT? Abstract data type. What is the meaning of it? I hope you understood user defined data type. Okay. What is the abstract data type? Abstract data type are those data type. Yeah, somebody has raised a hand. I have no desktop. I don't understand what you really want. Okay. If you have any question, just put in the chat. So the most important thing to understand in data structure is the ADT, abstract data type. What really abstract data type is all about? Abstract data type are those data type whose operation has been defined, whose characteristics have been defined. But I will be making it again. So what is defined for ADT? Operation have been defined. What operation will be there? But how is not defined. How नहीं दिया गया है. क्या दिया गया है? क्या क्या होगा? What is given? Characteristic दिया हुआ है. What is given? Characteristic is given. But how it will be implementation is not defined. Understood? क्या define किया गया है? उसके characteristic डिफाइन किए गए हैं, लेकिन उसका ऑपरेशन डिफाइन नहीं किया गया. जस्ट टॉक अबाउट द स्टैक. ठीक है, स्टैक की बात करें या क्यू की बात करें, तो क्यू में कोई क्यू डेटा टाइप होता है किसी लैंग्वेज में, सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, पाइथन में. क्यू डेटा टाइप इज देयर रियली? पाइथन में क्यू नाम का एक अलग से लाइब्रेरी होती है ना, डिक्यू नाम की लाइब्रेरी होती है. ठीक है, सो पाइथन में भी यू हैव टू इंस्टॉल अ सेपरेट लाइब्रेरी टू डू द डेटा स्ट्रक्चर वर्क, है ना. सो पाइथन में भी simple Python will not do. You have to install to import libraries there. But yeah, so Q data type is not there, but you have to create Q. You have to create a stack, है ना. डेटा स्ट्रक्चर में आप क्या करते हैं? क्यू स्टैक, ग्राफ, ट्री, डिफरेंट टाइप के ट्री बनाते हैं. दीज आर अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. ये क्या अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है कि क्यू में what will happen, what operations are allowed is defined. What is defined? Q will have a list like thing. Q will be a list like thing where insertion will be only happen at the
back side, and deletion will be always happen from the front side. Yeah, Manas is saying that we can use linked list or loops for queue. Linked list or loops नहीं, linked list के सारे हम queue को implement करेंगे. I'm coming back to what really linked list is. Linked list is not a abstract data type. Be sure about that. लिंक लिस्ट हमने स्ट्रक्चर और पॉइंटर के मदद से बनाया है, उसकी मदद से हम क्यू और स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे. ठीक है, क्यू और लिस्ट को हम अरे के सारे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट इट विल हैव अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस, है ना, कि साइज का लिमिट हो जाएगा, है ना, इंसर्शन इन बिटवीन बहुत प्रॉब्लम करेगा, है ना. तो लिस्ट क्यू कैन बी क्रिएटेड, stack can be created with the help of array, but it will have inherited say shortcomings. इसके shortcoming होंगे. जो array का shortcoming है, size once defined you cannot check is sufficiency will be slow. In middle में जो work करना है, insert करना है, delete करना है, it will be very difficult. So we generally don't implement the queue or stack using array. We implement is using linked list. So remember, linked list not a data structure, abstract data structure. The abstract data type is stack and queue that we implement using array, that may implement using the linked list. That is the point is here. That is what the queue, that is why I say that stack and queue is abstract data type. Means what will happen, how the operation will be done is not given, but what is allowed is given. Its characteristics is given. Stack, we talk about stack. Stack is something like a queue, if I say in this way, where the insertion as well as deletion is possible only on the one side. Okay. We will talk about the LIFO FIFO, but just think is in a very simple way कि जो last में आया है वही सबसे पहले remove होगा, है ना. That is what operation has been defined कि यही operation हो सकता है. So that is why it is abstract data type. Means data type का operation क्या क्या allowed है वो दिया हुआ है, characteristic क्या क्या allowed है वो दिया हुआ है, लेकिन कैसे इसको implement करना है वो नहीं दिया गया, वो आपके ऊपर छोड़ दिया गया कि आप कैसे करेंगे. सी में वी यूज लिंक लिस्ट और अरे. ट्री, ट्री ट्री नाम का कोई डेटा टाइप नहीं है. वी विल इंप्लीमेंट इट यूजिंग लिंक लिस्ट. अरे से भी कर सकते हैं, तो थ्योरेटिकली कर ही नहीं सकते, बट इट विल बी हाईली इनएफिशिएंट. सो जस्ट टू सेक ऑफ की करके दिखा सकते हैं, तो छोटा सा मैं हम बना भी सकते हैं, बट इट इज ऑफ नो यूज, है ना, कोई एडवांटेज नहीं है लिंक लिस्ट के अलावा. तो इसके अरे के सारे हम बनाने का कोई जरूरत भी नहीं समझते. वी विल नॉट बी क्रिएटिंग इट, बट यस कैन बी क्रिएटेड with lot of limitations. So how the tree will be created, it is upon you. But tree का operation define किया गया है कि it will have two pointer of one side, है ना, left होगा right होगा, है ना. बाइनरी ट्री अगर हम बनाते हैं, बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं, तो हम करेंगे कि बिगर वैल्यू विल बी केप्ट ऑन द राइट साइड, स्मॉलर विल बी ऑन द दिस साइड. इसमें और डिफरेंट टाइप का सर्चिंग करने का डिफरेंट एल्गोरिथम डिफाइन किया गया है कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च ग्राफ बनाएंगे तो कैसे सर्च करेंगे, इसमें किसी चीज को फाइंड कैसे करेंगे, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे, किस ऑर्डर में ट्रेवर्सल करेंगे. दिस एवरीथिंग इज गिवन, but how the code will be written, it is not given. Okay, so I hope everybody got it. What is abstract data type? So next day we will be installing the things and we will be starting some programming. Okay, so I hope you understand basic concept, what really data structure is all about. And we want everything to be fast and very, very efficient. Hope everybody has got it. Okay, so tomorrow we will be doing the coding, and we will be going the technically what things you will be installing and everything, and we'll talk about the other type of things, the different type of algorithm, dynamic programming, and those different type of algorithm we will be talking about by and by. Okay, so
let me conclude today's session. Join tomorrow for an interesting session. I hope that you all found this session interesting. I hope. Yeah. Yeah. So tomorrow, I want to see you tomorrow Sunday, but the class is there. Okay. Fine. Bye, everybody.